ऐसे बोला जाता है कि योर वर्क डिफाइंस यू। और मैं भी इसमें काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ। वट एवर यू डू, आप जो भी कुछ करते हो, दैट मेक्स योर आइडेंटिटी, वही आपकी आइडेंटिटी को बनाता है। सो हम इस पे बहुत ना एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आई होप दैट यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट। लोगों को ये इसमें काफी मजा आने वाला है। एंड पीपल विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। लोगों को काफी मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि लोगों के काम का कितना फर्क पड़ता है, उनकी आइडेंटिटी कैसे बनती है जब वो कोई काम करते हैं। और जब किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, सो व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी दे कैन हैव, और व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रेशन दे कैन लीव ऑन पीपल। लोगों पर कैसी वो छाप छोड़ सकते हैं, ये आप जो है ना हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सो हम पहले इसमें बहुत स्टार्ट करें इसमें, उससे पहले आई वांट यू टू स्टार्ट समथिंग अबाउट द सेम, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स ऑन द सेम। हम इस पर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकें। ओवर टू यू। Okay, good evening to you and good evening to everyone. So, topic that we have today is our work defines our life, right? या मतलब हमारा अगर बोले हिंदी में तो हमारा जो काम होता है वो किसी न किसी तरीके से हमारा ओवरऑल जो जीवन होता है उसको निर्धारित करता है। वो किस किस तरीके से करता है वो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. ओके. Because when we say that our work defines our life, then we mean that we are only understanding this very whole concept using one frame of reference, right? So people who use this frame of reference may end up concluding this कि भाई हमारा काम हमारे जीवन को निर्धारित करता है, right? But the next question arises right after that कि is there only work or actions for which we are here, or there is something beyond this, right? Because the time when we limit ourselves, especially with our work identity, which means we somewhere block of our overall life in terms of understanding it beyond the work we do, right? तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा, इस चीज को भी लेके हम डिस्कस करेंगे. लेकिन बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट our overall work, professions, our performance of actions on a routine basis significantly conclude us as a persona, right? We may have different opinions on it, but as I've told you already, by and large, people will understand you through your work, through your actions, right? So it really plays a crucial role. So work plays a crucial role, and I think there is no as such reason to go denial with this. In fact, our entire scripture of Bhagavad Gita, जो पूरी भगवत गीता है, वो बेसिकली किस पे आधारित है? एक्शंस पे ही, अगर एक्शन पे, ओवरऑल यस। हम देखें तो. So even Lord Krishna, you know, puts a greater emphasis on actions. He suggests person or an individual to practice detachment, but the precondition he has already laid it down very in clear and black and bold letters, black and white letters, that कि पहले आपको perform करना पड़ेगा action. You have to first perform actions, and thereafter you have to practice or exercise detachment. So if you begin uh, to practice this detachment before you go into this field of work, then you may end up being a hypocritic, right? As what many people say, that we are practicing it spiritualism, और इसलिए हम लोगों को कुछ करना नहीं है. Therefore, we are taking ourselves away from this material world and mundane reasoning, and therefore we are not going to delve with this perplexities of life. जो रोजाना का जो एक तरीके से जो जीवन की जटिलता होती है, वो लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को उससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिज्म. तो लॉर्ड कृष्ण सीधे से बोलते हैं कि इन दिस वे वी विल ओनली यू कैन से गिव बर्थ टू हिपोक्रिटिकल माइंडसेट. पाखंडी लोगों को बोलेंगे जिनको काम नहीं करना है, जो काम से डरते हैं, राइट? जो बिल्कुल भी कुछ दे रियली डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, एंड दे रियली get scared of participating, especially in this chaotic competitive world.
So they often have this very strong reason, or the weak reason you can say, either कि भाई हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है because we are practicing detachment. हमें दूर जाना है तो हमें करना ही क्यों है. So see, it's really important thing. So our entire topic, which says that our work defines our life, is somewhere revolving around what Krishna has said, especially in the Bhagavad Gita. Lord Krishna has said. Moreover, how do we understand life at on an individual level? Because our lives, I think, are different life. Our experiences are different from others, undoubtedly, right? So I think we should deal, this topic in that way, and let's try to unfold things up what we have for the viewers, right? So that's what I have to say in the beginning. Yes, as we know that everybody is different, हमें पता है कि सभी लोग ना डिफरेंट होते हैं, nobody is the same। और सेम अगर होते भी हैं तो वो कुछ मायना में होते हैं, बट वी आर नॉट completely सेम, एक ही तरह नहीं होते हैं। So some people may regard their job as the only thing they put a lot of emphasis on, or they give so much importance to। या तो वो अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो वेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, बिकॉज सभी का अपना अपना नजरिया है। लेकिन हम जो बातें करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे ऐसी है जो वास्तव में सभी लोग अग्री हो सकते हैं इस पे। बिकॉज कहीं ना कहीं पर जो बात हम करने जा रहे हैं वो केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, इट्स बीन सेड इन द भगवत गीता एज वेल एज यू सेड कि बिकॉज दिस वर्ल्ड इज बोलते हैं ना कि कर्म प्रधान है ये पूरी दुनिया। Yeah. राइट, और इसमें भले ही आप है ना किसी रिलीजन को प्रैक्टिस मत करो, बट इफ यू आर डूइंग योर ड्यूटीफुली, इफ यू आर डूइंग योर वर्क और जॉब वेरी ऑनेस्टली, आई थिंक यू Hmm. आर डूइंग अ काइंड ऑफ वर्शिप, तो आप है ना किसी तरीके से पूजा कर रहे हो। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें बात करनी है वो ये करनी है, हम पहले बात करेंगे आइडेंटिटी और वर्क की, कि हम वास्तव में क्या अपने आप को कहीं बांध रहे हैं किसी जॉब टाइटल से, या फिर हम उसके भी कहीं आगे हैं। राइट, ये हम बात करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इज, टेल मी, डज टाइम आइडेंटिटी टू वर्क एम्पावर अस और लिमिट अस? क्या हम किसी वर्क से अपनी आइडेंटिटी को मतलब बांध रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं? तो ये क्या हमें कुछ एम्पावर करेगा या फिर हमें कहीं ना कहीं लिमिट कर देगा? और अगर दूसरा पॉइंट भी मैं भी साथ ही साथ में रख दूं, बिकॉज दे somehow they are one question rolled in, I mean, there are two, there seem to be two questions but they are rolled in one, right? Hmm. So, दूसरा ये है कि हु आर यू बियॉन्ड बियॉन्ड योर जॉब टाइटल? क्या हम जॉब टाइटल के परे भी कोई हैं? सो दिस इज समथिंग विच वी आर गोना टॉक अबाउट। सो पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या हम किसी जॉब टाइटल से अपने आप को टाई कर लेते हैं तो ये हमें एम्पावर करता है या फिर लिमिट कर लेता है? देखो, मैंने right from the beginning I said that to understand such deeper and insightful topic, uh, I think it's better to avoid one specific frame of reference to understand that, right? यस। So we have to take other opinions in consideration for better clarification on this, because now we are talking about our work first and identifying ourselves with the work हम्म। results. What does it empower us, or it limits us to a certain extent, right? तो ये चीज बहुत important है हमारे लिए now. So we have to discuss and talk the both sides of it, because we have people following both opinions, by the way, and holding both opinions, trust me. For example, So you mean to you say no answer can be an absolute answer? yes, yes, that's what I'm trying to say, because to be saying one thing or taking one side, I think would be an extreme Yeah. version. Yes। And I think it doesn't go with the specifically the topic that we have taken for the discussion, right? Because it really doesn't have one single answer. So you are talking to me on this point. I may have my own experience. You may have different, explanations from the different people too, Yeah। from their, experiences, right? So अब जो ये वाली बात है यहाँ पर कि does it really empower us or limit us? Now, हम्म। so we need to understand both, characters, both types of personalities. What are these both types of personality? First, those who really consider the
their work, their profession as supreme to them, which Yes. means there is no second thing which stands out except their work. We have this number of people, and we have, especially in the society, existing with this kind of mentality, right? They are really happy with their work for 24 hours in a day. They can relentless perform their actions for 24 hours without showing or indicating any, you know, I mean, exhaustion, right? Because they may find themselves really healthy and really active. They feel that their life becomes so uh, full when they get engrossed deeper, especially in their actions. उनको ऐसा लगता है ज्यादातर. Mostly corporate sectors के साथ क्या होता है ज्यादातर देखो, you go and ask some corporate, okay, let's not talk about corporate sector, mostly because corporate sector, employees are working more for money, according to me. Maybe they have their different purposes too, but let's take an example of scientists. I mean, it is the most befitting category. Philosophers too. I mean, scientists especially falls in the category where they spend their numerous time, especially in thinking, pondering, doing contemplation on only one thing for years and years. Sometimes they really don't get answer to their first question, but they really spend their entire life, such a valuable life, for और doing इसका something. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है मेरे हिसाब से अब्दुल कलाम का, राइट? when he when he was done with the missile making, right? Yeah. He found that he was too old to marry, and he couldn't marry because he was so Yes. engrossed uh, That's making the missile. Yes. ये सारी चीजें ना, दिस इज नॉट जस्ट आवर लेट अब्दुल कलाम आजाद had stated. Many scientists go through this very lifestyle because they really don't have much time in their life Yes. except doing their own work, because they really relish on what they perform, what they do. They really, so maybe they cannot be a good uh, I mean a relationship holder. That's what I can say. Yeah. Because according to them, if there is something which they could love, is their only work and the profession, right? तो Yes. इन लोगों के लिए काम ही सबसे बड़ा है. So now, if you ask this category, including the scientists and philosophers, then probably they'll say life is not beyond work, and it's better to identify ourselves with our work. People must know us by our actions, by our work. And if it really happens in any case, then it certainly empowers us. And I think those who are the follower of this opinions, I think may say it. And I think there is no denial in that, by the way, isn't it? Because when you are known by your actions, why do we appreciate Dr. Abdul Kalam Azad? Secondly, don't we find him a source of inspiration? Yes, he's an inspirational source for millions and millions of people living in India and across the world. Yes. So people admire him a lot. People get inspiration. So he's a source of inspiration for many people. So I think he has done justification with his life, right? So he's fully, I think, satisfied wherever he is now. I think he would be purely, satisfied, thoroughly satisfied, because people want to be recognized by their works. और ऐसे लोग जो काम करते हैं बहुत ज्यादा, वो अपने काम के द्वारा जाना चाहते हैं, तो समवेयर दे गेट एक्नॉलेजमेंट. मोर ओवर, हम आज भी जो साइंटिस्ट को देखते हैं, जो भी आज काम करते हैं, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली. I mean, I really don't find Virat Kohli is excelling in any field except cricket. Whatever he has earned, including wealth, fame, and overall identity, it's just because of his passion for Yes, cricket, passion for cricket. Yes. right? He, huh? एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कृष्णा की, तो कितने लोग ना वसुदेव जी को जानते हैं? मेरे सबसे ज्यादातर है ना लॉर्ड कृष्णा को ही जानते हैं, बिकॉज ऑफ हिज हाँ. वर्क, बिकॉज ऑफ द थिंग्स ही डिड. तो उन्होंने जो किया था उसकी वजह से उनकी पहचान हुई थी. तो Right. ज्यादातर लोगों की पहचान जो होती है वो उनके काम से होती है. जैसे कि Right. विराट कोहली की बात की गई है. आई थिंक ही इज नॉट नोन फॉर अदर थिंग्स.
बट right, right. क्रिकेट, बट फॉर क्रिकेट, राइट। क्रिकेट के लिए उसको जाना जाता है, और जो भी वेल्थ कमाया, जो फेम कमाया है, वो भी क्रिकेट की वजह से, बिकॉज ही इज गॉट, ही हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू Right. क्रिकेट, राइट। जिस डेडिकेशन के साथ में जो खेलता है वो, एक और चीज, जो डेडिकेशन उसने दिखाया है क्रिकेट के लिए, तो वो साथ ही साथ में उसने अपनी हेल्थ के लिए भी दिखाया हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसकी हेल्थ और जिसकी फिटनेस है वो क्रिकेट से रिलेटेड ही है। Right, क्योंकि right, right. हेल्दी नहीं रहेगा, वो फिट नहीं रहेगा, ही कैन नॉट प्ले गुड क्रिकेट, तो वो अच्छी क्रिकेट भी Right. नहीं खेल पाएगा। सो ही इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज जॉब, पूरी तरह से So डेडिकेटेड है। in other words, we can also say this, that Virat Kohli attached and aligned his overall purpose of life, specifically with the action of cricket, with the passion for cricket, right? हम्म। And since he has already decided that he has to play cricket and it is his only life, then he is ready to do compromise on all forms of aspects, right? For example, I heard that Virat Kohli is pretty strict about his diet. या, आई हैव आल्सो He, रेड अबाउट हिम। he is wealthy. He can obviously afford any sort of food for him. He can go and taste any varieties of food, however delicious it could be, however expensive, sumptuous it could be. He can easily arrange it for himself, right? But he chose not to taste it, not to consume it, right? Because of, as you rightly said, because he attaches himself with the action of cricket. And the requirement of the cricket is that he has to remain fit, stay fit, यस। right? तो वो सारी चीजें नहीं करता। तो विराट कोहली, philosophers, scientists are truly examples. Now, if you learn from their life and understand them, going deeper into the life, then purely we can understand what that yes, this profession, this work identity empowers us a lot, right? Because all these characters right now who are so existing and who have existed in some point of time in life, they really got empowerment in their life, right? People appreciate you means you are getting empowered, right? I am appreciated for my work. I'm a lawyer by profession, so maybe I become really a great lawyer one day, or I am all doing great in my professions. I am meeting up with the needs and the requirements of my clients, right? So people would come bless me. People would really come and ask for help. I would be there for their help. So in other ways we can say I'm getting empowerment because I have got this acknowledgement, a large acknowledgement, a global acknowledgement, right? So ये तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमको दूसरी बात भी करनी चाहिए इसके साथ, the second एक और opinion. पॉइंट मैंने जो जो बात की थी वो ये है कि हु आर यू बियॉन्ड योर जॉब टाइटल। क्या हम जॉब टाइटल के परे भी कुछ और हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं पे वी आर टाइंग ourselves टू मच टू द जॉब टाइटल्स, और वी आर बियॉन्ड इट एज वेल। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. हैव यू एवर सीन अ डॉक्टर, a very passionate doctor who is really engrossed in his duties? So when you see him more closely, I'm not talking about that random doctor. I'm talking about those specific doctors who are really devoted to their professions, right? Regardless of the time, they are always ready for services, and they really don't give importance to other things in their life, right? So उन लोगों के लिए क्या है कि they are really identifying themselves with the work. उन लोगों के लिए important है because for them, uh, work is important, right? But at the same time, the same category of people, especially these doctors, uh, really see their work beyond its limitation. For example, जैसे कि एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर, he is all satisfied with the money that he earns right from the month, right? And he's being all satisfied with the perks he gets from the government side or from any other side, right? अब लेकिन ये जो डॉक्टर है वो पेशेंट को बिल्कुल कोशिश करता है कि अच्छे से सही कर सके उनको. ही ऑलवेज ट्राइज हार्डर टू गिव अ परमानेंट रेमेडी और ट्रीटमेंट, राइट,
to all the patients, and until the patients feel satisfied, right? He continues to serve that patient, irrespective of the time that he has given to the patient, irrespective of other situations arising simultaneously in his own family, uh, specifically in his own families, right? वो फिर भी लगा रहता है देने के लिए कि भाई मेरे को पेशेंट सही होना चाहिए। तो ये लोग ऐसे होते हैं because for them they have seen professions, their professions beyond it, right? Because वो उसको सैलरी सही से मिल रही है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी वो क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ही वांट टू सर्व देयर पेशेंट, he is looking for what? Inner values. Now the next things which I'm talking about is that inner values. हम्म। Some people work for money, some people work for just work, they are really passionate about it. सेटिस्फैक्शन। Satisfaction. Some people work for inner values, means I mean, for them, inner values are very significant, very paramount to them, right? They cannot compromise on that. And somewhere it gives them a feeling of solace. It gives them a feeling of reassurance, या especially when they are not feeling, good, they are completely dejected by any of the reasons. So ऐसे लोगों को इनर वैल्यूज की जरूरत, वो सपोर्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास सारे तरीके के एग्जाम्पल है, सीधी भाषा में अगर बोले तो हम लोगों को, तो लोगों को हमारे पास we have the same category of people, those who feel that yes, work is the only thing which keeps uh, fueling us our life. And there is also segment which says that there is beyond your work, there is something beyond your work which is called inner values, right? Even people can compromise on money, but they hardly can compromise on their inner values. They cannot compromise with the principles. Many people we have seen right in the world. So दोनों तरीके के हमारे पास people हैं. Now we have to choose things, and first of all we have to ask ourselves what category suits us, because we have our own total perception, the sum total of our entire understanding. तो उसके हिसाब से हम लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। और मेरे हिसाब से देखो, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। आप जस्ट जॉब कर रहे हो, आपको पेमेंट तो मिल ही रहा है उसके लिए। एंड इफ यू इमर्स योरसेल्फ इन दैट जॉब, आई थिंक यू आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट यू गेटिंग पेड फॉर, राइट? उससे भी आप आगे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करते हैं किसी टीचर की, अगर बात करते हैं किसी डॉक्टर की, सो मान लो डॉक्टर ने ऑलरेडी पैसा तो और कमा ही रहे हैं। अगर देयर इज समबडी हु इज सिवियरली इल और टेरिबली इल बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द ट्रीटमेंट, सो आई थिंक यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर आउट ऑफ द वे जाता है और वो उसको ट्रीटमेंट मतलब प्रोवाइड करता है विदाउट चार्जिंग टू मच, और or some doctors I've seen that they do this free of cost, because they understand that they're already making money. So I think they, if they treat somebody who's not able to pay them, so I think this, they are not losing anything, because Right. this is their duty. This is they have got one relationship with them, that is the humanity, the relationship of humanity. And this is what we can say that कि हम beyond job भी, we are beyond job as well, हम beyond Right. job। और I think this is something many people may not be giving it too much importance। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैंने देखा हुआ है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, देन अगर आपको वैसे कुछ नहीं मिल रहा है, देन यू गेन वन थिंग, दैट इज इनर पीस। Inner एटलीस्ट peace, right. आपको इनर पीस मिलती ही है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, ऐसे में एक और को जानता हूँ, अगर आप जानते हो, रोबिन शर्मा, ही इज अ फेमस writer and author actually, and he is an international motivator or motivational Yeah, speaker, and he is a phenomenal speaker। मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, whenever he goes to write a book, जब भी कोई बुक लिखता है वो, he spends months and years away from his home। इतना डूब के लिखता है दैट ही रेंट्स अ रूम इन अ होटल। होटल में वो दूसरे कंट्री में जाके रूम को मतलब रेंट पर लेता है, वहां पे लिखना स्टार्ट करता है, पूरे बिल्कुल ऐसे लिखना स्टार्ट करता है वो। एंड ही डज सो, ही इज अ काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एवरीथिंग, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, काफी सारे yeah, ऐसे काम भी करता है वो। तो दिस इज व्हाई डज ही डू सो, वो ऐसा करता क्यों है? बिकॉज ही हिमसेल्फ एक्सेप्ट्स, एडमिट्स, वो क्या कहता है कि
मेरे प्रोफेशन से मैंने खूब पैसा कमाया ही है, बट वेन एवर आई डू समथिंग फॉर पीपल, दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एंड इफ ही इज एबल टू डू समथिंग just because the positive energy he's gaining from doing things which people get benefited from, जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है। एक और चीज हम बात करने वाले हैं, वो क्या है, अगर हम बात करते हैं पर्पस के प्रोफेशन की, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपका पर्पस और आपका प्रोफेशन अलग अलग चीज है। यस, विल बी क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन नो डिस्कवरिंग अ पर्पस, हम इस पर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या बात करने वाले हैं कि पर्पस अगर प्रोफेशन की बात करें, तो डज योर वर्क गिव मीनिंग? क्या आपका जो काम है, जो हम करते जो प्रोफेशन है, वो क्या हमें लाइफ में कुछ मीनिंग देता है? या फिर वी नीड टू गो आउट ऑफ द नो आउट ऑफ यू नो मीन्स वी नीड टू गो आउट ऑफ द ट्रैक एक्चुअली हमें, या फिर आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा उस मीनिंग को मतलब प्राप्त करने के लिए? Can it be gained from your profession itself, or do you have to do something else, something different, which can give meaning to your life? देखो, first of all, this question is really deeper, by the way. So we need to be a little careful while using certain words, because what we are talking is that does our work, promote any sort of objectivity in our life, or reflect any Hmm. sort of objectivity in our life, which is basically a sole fuel or a source of that professions or that work we have chosen, right, in our life. तो ये तो कहना मुश्किल है, बिकॉज फिर वही वाली बात आ जाएगी कि एवरी पर्सन हैज द डिफरेंट एक्सपीरियंस. Yeah. बट बट वन थिंग इज acceptable, and what is acceptable, that people whom we call successful uh, usually have a great reason behind what they work. It could be anything, Hmm. because they are very well organized and they are very clear in their thoughts, unlikely uh, those who have their vague understandings about life, right? So, first of all, these people, since have a clear understanding, they can see things very clearly, reflect things very clearly. So, their objectives are very clear in their life too. And therefore, they navigate it accordingly. You know about your goals, then I think it's not going to be difficult to set a course to achieve that goal. Problem arises when we are not certain about the goal, let alone talking about There is no setting up a course. clarity. There is no clarity about about our जब goals. जीवन में क्लैरिटी ही नहीं है, when you don't have any goal, any objective, any purpose, then you may randomly shifting yourself from this way to that way. Hmm. Yeah. You may select a number of courses, may decide number of paths for your life, but you may end up being somewhere on the uh, on the side which is not satisfactory according to me, right? You simply want to say that being It is jack a of all failure. trades, being Yeah, jack of all trades and master of none can never give you meaning. obviously, yes, you can say right this, you like this, right? हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है इसमें. तो ये तो हमने देखी बहुत सारे लोगों की बात, जो those who are really successful, those who have really accomplished some great things in their life, and they really leave a great impression on people, right? You talked about Robin Sharma. Robin Sharma is a famous, motivator. He is a writer too. Now, if you ask him personally, and I think he has written it, you know, I mean, with a volume detail Hmm. about the importance of objective in life, let alone talking about the work. एक बुक है, द वेल्थ मनी कैन नॉट गिव। इट्स Hmm. अ फैंटास्टिक बुक, उसमें लिखा हुआ है ये सब चीजें। हाँ, तो ये चीज, अब ये जो राइटर्स हैं, तो कहने का मतलब है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू इंसिनुएट, he only means to say is that you want to make your life easygoing, comfortable, then it's better you should know what you want to do. I mean, life is full of, as I told you, perplexities. It's a puzzle, Yeah. uncertainty. So
when you are randomly picking things up in your ways, then you may be, confused. Now, when you are confused, you will strain your brain, your mind, right? Especially in this confusion or in a state of confusion, our body, consumes a lot of energy, right? How do we prepare for examinations when we haven't done slightly right throughout the year? We have to strain our brain, we have to go through number of chapters altogether in order to cope up with the requirements of the examination paper, but we end up being completely stressed, right? सो ये तो इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए कि हमको पहले तो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है लाइफ की वो बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए, पर्पस फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अच्छा, तुम चाहे जितने भी बड़े फिलोसफर्स की बात सुनो, दोज हु आर रियली गुड पॉलिटिशियंस, दोज हु हैव रियली laid down some strong principles, okay, especially how should people live their life, conduct themselves, you will find this one common thing in them. Their purpose in their life are very clear. I mean, it was not something that they were discussing and contemplating throughout their life. No, they were very clear on their paths. They were very clear on their objectives, and they were only focused and centered on the course which was suitable to them to help them reach to that goal or objective. वो लोग बस उसी के लिए कंसर्न रहते थे, तो फिर जो आपको जब गोल्स ही मिल गए आपको, तो आपको रास्ता तो चुनने में ज़्यादा समय लगना ही नहीं है, आप चूज कर सकते हो, राइट? प्रॉब्लम यहाँ होती है जब आप गोल्स को नहीं पिक कर पाते कि विच वन इज बेटर। तो एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात हो गई कि भाई ये तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल वी आर जंपिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन ऑर्डर टू मेक अ लॉट ऑफ हम्म, मनी। तो यहाँ पर हमारा कोई गोल नहीं है एक्चुअली, हमारा गोल केवल क्या है, पैसे कमाना। लेकिन पैसे कमाने से आप यू हम्म, बाय कंफर्ट्स, यू कैन हम्म। बाय सो मेनी थिंग्स राइट विच यू कैन एंजॉय, बट इससे मीनिंगफुल लाइफ मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीनिंगफुल जैसे कि बोला जाता है दैट मीनिंग इज डिस्कवर्ड और फाउंड इन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ हमें छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग मिल जाता है अगर हम सही ढंग से देखें तो। लेकिन उसके लिए वी हैव टू बी क्वाइट क्लियर अबाउट अ गोल। हमारा अगर गोल क्लियर नहीं है तो वो छोटी छोटी चीजें मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो चीजें मिल भी जाती है ना तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं दैट व्हाट इज गिविंग अस इमेंस हैप्पीनेस, व्हाट इज गिविंग इमेंस व्हाट इज एडिंग वैल्यू टू अवर लाइफ, क्या हमारी चीज में वो जो वैल्यू ऐड कर रहा है, ये भी हम कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाते हैं केवल एक ही चीज की वजह से कि या तो हम थोड़ा सा वी आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू बी क्लियर, या तो हम क्लियर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अगर कोशिश अगर कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि हमें वो मीनिंगफुल वो जो एक जो लाइफ है वो नहीं मिल पाती। वैसे हम जो प्रोफेशन जो करते हैं दैट इज अ वे ऑफ मेकिंग मनी, बट अगर वो हमने डिसाइड किया हुआ है हमारे हमारी जो भी हमारा लाइफ में एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके सबसे डिसाइड किया हुआ है तो समवेयर इट इज गोइंग टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मीनिंग देने ही वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपने डिसाइड कैसे किया था अपनी लाइफ के उस गोल को, अपने क्योंकि ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट क्या है, अपना एंड गोल क्या है, वो आपने पहले से ही दैट वाज देयर इन योर माइंड, आपके माइंड में पहले ही था, दैट वाज समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड नाउ you are doing the things according to that particular end, keeping that end in your mind। आप अपने मन में वो रख के याद के मतलब आप काम कर रहे हैं जो अपने एंड हमारा क्या होने वाला है, अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है, एंड इट इज सर्टेनली गोइंग टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ, और इससे लाइफ में मीनिंग मिलने ही वाला है। राइट, ये मेरा लेकिन एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन एक चीज और हमको समझने साथ ही साथ कि वी कैन नॉट अंडरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी, Yeah, that is, यू नो। it's a kind, money is the wheel in the It is the vehicle of way. life। I mean, our material needs can only be fulfilled when you can arrange certain amount of money, right? Yeah. Moreover, we are responsible to some people in our life. Now, being a responsible person, we need to ensure that these material needs or unfulfillment of these material needs should not be a reason for the failure of our closed one, as it Yeah. happens in most of the cases. See, we many people know the importance of objectives in their life, but just because of the circumstances,
as such, they cannot really even willingly, live the life they want. For example, if you go and interact with any labor who really works hard a lot, 14 hours in a day, and he gets only meager amount for his hard working. And Yeah, if you ask him personally, how does he enjoy his life? And I mean, does he have any objective? Then he will simply say one thing, probably according to me, that he really doesn't want this. But just because of he is responsible towards his family, he's he is having the to do it. only He's he having is to the do it. only sole, yes, bread earner, and therefore he has to be very, I think, compliant towards the needs of their own family members. So for him, this objectivity purpose may not be very personal objectivity and personal aim would not be, meaningful. But since the importance of money, according to him, is really, I think, much अकॉर्डिंग टू मी, सो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो देखो, सब लोगों की लाइफ, मैंने बोला था राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि वी पीपल हैव दैट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वी हैव दैट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑल टुगेदर। सो द थॉट प्रोसेस वी डेवलप, the identities we develop, and our overall, you know uh, uh, penchant for certain professions we develop are all according to this very, combination of environmental factors, and in which it includes only a few things: our circumstances, conditions, background, social conditions, financial conditions sometimes too. तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो कहने का मतलब है दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मटेरियल नीड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्वाइविंग के लिए हमें क्या जरूरत है? हाउ यस, वी कैन सर्वाइव? सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट है। I mean, we can only survive with the help of money. So money must be there with you as a source of engine, because it's some source of income, right? और मैं क्या मानता हूँ कि साथ ही साथ में, बिकॉज हमें, वी कैन नेवर हैव दैट परफेक्ट लाइफ। अगर हमें परफेक्ट लाइफ, अगर हम सोचते हैं कि परफेक्ट लाइफ हमें जीनी है, सो दैट कैन ओनली हैपन इन योर ड्रीम्स और इन अदर वर्ल्ड। आई थिंक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वर्ल्ड, बट लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। इट इज जस्ट अ वर्ड, राइट? फॉर यू समथिंग मे बी परफेक्ट, बट द पर्सन हु इज देयर, इट मे नॉट बी परफेक्ट। हमारे लिए वो चीज परफेक्ट हो सकती है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए जो वहां पर है, उसके लिए शायद वो परफेक्ट ना हो। Right. व्हाट आई बिलीव इज कि हम साथ ही साथ में, देखो, चीजें हमारे हिसाब से सारी हो जाएं ये तो पॉसिबल नहीं है। नथिंग कैन, नॉट एवरीथिंग कैन बी एज पर योर हाँ, एक्सपेक्टेशंस, वो तो हो नहीं सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा कर कर अगर हम साथ ही साथ में वो कर लें, तो मेरे हिसाब से हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर यूर ऑल्सो डूइंग ए जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग ए जॉब, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, अभी जॉब कर रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी लव डूइंग। हाँ, हम that's करना है right. ना, हमें पसंद है। अगर यहाँ पर बैठकर अगर हम थोड़ी बात कर रहे हैं, सो वी आर लिविंग दैट लाइफ विच वी रियली वांट टू लिव, तो हम जी रहे हैं। Right. तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सकें? मान लो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, सो सपोज आई एम Mhm. डन विद माय जॉब Right, एंड right. बैक होम, एंड नाउ आई गॉट हाफ एन आवर फॉर माई सेल्फ, आई कैन Mhm. प्ले सम म्यूजिक। मैं कुछ फ्लूट बजा सकता हूँ, मैं कीबोर्ड बजा सकता हूँ, जो भी मैं अफोर्ड कर सकूँ बजा सकता हूँ। इट इज माई चॉइस नाउ, ये मेरी चॉइस है, राइट? इफ आई वॉन्ट टू सिट टुगेदर विद माई फ्रेंड्स एंड इफ आई वॉन्ट टू सिट टुगेदर विद माई फैमिली मेंबर्स एंड टॉक टू देम, दिस इज वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, दिस इज गोइंग टू मेक Mhm. माई लाइफ फुलफिल्ड, दिस इज वॉट आई कैन डू, ये मैं कर सकता हूँ अगर Mhm. चाहूँ तो। थिंक थोड़ा थोड़ा करके हम वो जी सकते हैं, दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ, ऐसा बन सकता है Mhm. पूरी लाइफ, राइट? So profession is no guarantee that it is going, and doesn't have any guarantee that it is going to give you meaning. But yes, अगर आप उसमें मीनिंग खोजो तो शायद आपको मीनिंग भी मिल जाए। अगर वहां पर नहीं मिलता तो शायद कुछ और करने से जो आप वास्तव में चाहते हो, यू कैन डिस्कवर दैट जॉय, दैट मीनिंग विच यू वांट टू बी देयर इन योर लाइफ, राइट? एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या है? हाउ कैन वन इन्फ्यूज डीपर मीनिंग इनटू व्हाट दे डू? बिकॉज चॉइस ही नहीं बचती हमारे पास में कि हमें इसके Mhm. अलावा कुछ हम और हम कर पाए। तो हम जो कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें हाउ कैन वी इन्फ्यूज दैट डीपर मीनिंग? तो हम उसमें एक डीपर मीनिंग कैसे इन्फ्यूज कर सकते हैं? देखो, ये तो सिंपल, इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए सीधी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, वी नो हु वी आर इंटरनली, वी नो आवर प्रेफरेंसेस, वी नो आवर ओवरऑल नेचर, आवर ओवरऑल टिल्ट,
right? And our overall, you know, uh, I think desires, every person has their own specific desires, right? Now, some people, due to busyness in their life, some people due to some financial reasons, some people due to the social reasons, some relations issues might be there. Yeah. Uh, I mean, people really cannot enjoy those things, what they really want, what they really think is truly uh, uh, life nectar to them, but they cannot enjoy it just because of the following reasons I have just said, right? तो अब क्या होता है, जैसे कि तुमने बोला कि हमको मालूम पड़ गया कि हमें कोई चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल आई लव टू प्ले गिटार, Hmm. राइट? नाउ प्लेइंग गिटार टेक्स ओनली few minutes. I need to Hmm. just take the guitar in my hand, just tune in and start playing with the strings, right? So it takes me few minutes. I can enjoy it the way I want, and I can really entertain myself in this way. I can really uh, reduce the overall, burden of work, right, on me, whatever I have from my professional side, from my relation side, from my family side whatsoever. तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में एक तरीके से एक 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 वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू add values to your life, irrespective of the time, which is all, I think, uh, against you. देखो, सीधी सी बात तो ये है कि we all are somewhere dissatisfied. No one can say that they are completely satisfied with their life. Even the richest person, the most wealthiest person, can't say that he is all satisfied. Recently, I heard a news. Did you know this? That Elon Musk is taking depression. Is under depression, and Yeah, he he's takes taking depressing pills. pills. Yeah, sleeping pills. He's sleeping pills. Now, people are appreciating him. People really take inspiration from him because he's really a hard worker. He's a genius mind. Now he's really done remarkable things for the society. I mean, his hand on technology is really marvelous. He's very skilled in that field, right? Now, I mean, would that be fine if we say that Elon Musk has no objectivity in his life? Probably not, because he has a strong objectivity in his life. He's fully aware about his objectives, his goals. In fact, you might have heard about him saying that he wants to settle up the entire, uh, human civilization, especially on the Yeah, planet Mars. on some other planet. Yeah, हाँ, मार्स. तो yeah, वो तो उसके ऑब्जेक्टिव कितने बड़े बड़े हैं वो तो सारे, लेकिन फिर भी वो ले रहा है. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू इन द वर्ल्ड, राइट? एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू. नाउ इट शुड बी योर वे हाउ यू टैकल एंड हाउ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो हमारे पास जो भी है, वट एवर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, and without, questioning on what we don't have, out of grudge, out of complaint, right? If we could enjoy and entertain ourselves with the only available things, I think we can add much value to our life. Because हम जितना भी the more we complain and grumble about the problems, right, we can say we are losing our grip on life, yeah, because this life is much like a sand in your hand, right? It is slipping out every single second, every single moment. It is now on decline. You may not know what happens to you next, right? No one knows about it. So life is full of uncertainty. So इस कंडीशन में तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास है, एक चीज हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए. मैं पर्सनल बोलता हूँ कि वी ट्राई टू एड वैल्यूज टू लाइफ. नाउ things may be, I don't know, different for people, how they understand it. But when I say adding value to life means adding those things to life which really make us happy, rather than which make us famous, impressive in the eyes of people. Because if we try to imitate other, copy other, especially in the field of competition, in the field of personal life, and we do every work just out of a one thought that we want to
put this very impressive image of ours in the public domain to get more acknowledgement, to get more appreciation on it. तो वो ना एडिंग वैल्यू वाली बात नहीं हो जाएगी वहां पर, वो क्लियर में एड वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वी आर somewhere, we may present ourselves to be confident, but internally we are really vulnerable, and we are really torturing ourselves, pressurizing ourselves, as what happens mostly. So जो आपके पास available है, whatsoever it available to you in your disposal, if you can access it, even if it is not worthy enough for the large number of population, but it gives you equal amount of happiness, then I think it's better to go with that. I have some people around me who are very close friend to, I mean, very close to me, and they really live the life in that way, and they are always happy. They seem to be happy, and to a certain extent, I can say yes, they are living their life according to uh, the true definition of life what we understand, right? कि भाई सब जो है whatsoever you have, it doesn't mean that you have to stop working hard. You have to continue work hard, but for that you should not torture yourself. So stop doing this self torture, right? In the name of presenting yourself the most emphatic personality, dominating personality. I think this is not going to give you any, relaxation, right? तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा. So you wanna say that instead of being a burnout, we should be focusing on what energizes us. क्योंकि Right, right, आप बर्न आउट कर लेते हैं फिर बर्निंग योरसेल्फ आउट, तो फिर लाइफ में कोई मजा क्या रहेगा फिर, राइट? right. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो हम मैं हमेशा बोलता हूँ, बट मैनी पीपल में फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, और हालांकि मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन लाइफ में जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है, राइट? Life doesn't go according to your timetable. Nature has its own timetable and things happen according to Right, it. right. और लाइफ में जो चीजें होती ना, उसी टाइम टेबल के हिसाब से होती हैं, ना कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से। जैसे फॉर Right, right. एग्जांपल, इफ यू वांट टू settle down in a life by the time you become or you turn 27 suppose, तो क्या जरूरी है कि वैसा हो ही जाएगा? इट इज नॉट गारंटीड, गारंटीड तो नहीं है। आप यू कैन डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ, बट इट्स नॉट गोना बी फॉर श्योर। ये Hmm. जो पक्का हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए एक सिंपल सा मेथड है लाइफ में, एक बढ़िया सी लाइफ जीने का, दैट वट एवर कम्स योर वे, जस्ट एक्सेप्ट दैट। Right. एक्सेप्टेंस अगर लाइफ में आ गया, तो मेरे हिसाब से दुनिया में सब कुछ मिल गया। क्योंकि आप कितना भी रिग्रेट कर लो, आप कितना भी ब्लेम कर लो और खुद को टॉर्चर कर लो, लेकिन चीजें उससे नहीं बदलने वाली। चीजें बदल सकती हैं आपके कुछ करने से। और दोबारा से, जैसे कि हम हमेशा बोलते रहे, हमने पिछले वीडियोस में भी हमने काफी बार बोला है कि डोंट एक्सपेक्ट द डिजायर्ड रिजल्ट्स टू बिकम अ रियलिटी। हमेशा Hmm. ये मत सोचो कि जितना जो चाहा है वैसा का वैसा हो ही जाएगा। आप Hmm. करो और करने का मजा लो, Right, right. नहीं तो वो मजा बिल्कुल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इज, फॉर एग्जांपल, वी आर ट्रेडिंग आवर टाइम फॉर मनी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम अपने एक एक ही सबसे ना टाइम को ट्रेड कर रहे हैं पैसे के साथ में। Hmm. वी आर वर्किंग एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट, हम उस पर हमें मिल Right, रहा। right, right. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें बात करनी है वो क्या है, मेजोरिटी ऑफ आवर लाइफ स्पेंड एट वर्क। हमारी लाइफ का जो मैक्सिमम जो पार्ट है, मैक्सिमम जो पूरा हिस्सा है हमारी लाइफ का, वो किस में कहाँ पे चला जाता है? वर्क पे चला जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समझने की बात वो क्या है कि वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द जॉब, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी डू। हम जो काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जॉब है, चाहे जो भी हमारा जो काम कर रहे हैं वो है, तो जिसमें हमारी चीजें जाती हैं। सो वो हम काम कैसा कर रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो Hmm. पहला जो Hmm. क्वेश्चन आपसे पूछा वो ये है, इज ए वर्क वर्दी ऑफ द टाइम इट्स कंज्यूमिंग? पहला तो ये है कि क्या आप जो काम कर रहे हो वो उतना टाइम देने लायक है या फिर नहीं है। दूसरा चीज, व्हाट डज इट मीन टू मेक अ लिविंग विदाउट लूजिंग अ लाइफ? आप अपने Hmm. लाइफ को लूज ना करो और पैसा कमाना, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, पहले जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जैसे कि वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ ऑफ अ लेबर. सो दैट लेबर may not be happy with his life हम्म। and probably with his work, because his work gives him just a physical torture, mental torture, या and in a return of it, it only gives him some money.
हम्म। and which is not often sufficient to meet the ends of his family, right? But he's still doing that. He's still doing it because he understands his responsibilities and he has to maintain his responsibilities towards his members, right? तो उसको तो ये करना ही करना है, उसके पास कोई choices अवेलेबल नहीं है. Now, the thing which could be a little justifying this overall, labor or the hard time or the hardship of that labor is that he has accepted everything. That's what you have said, right, in a previous part, that whatsoever comes to us, we need to learn to embrace it. या So irrespective of how indignified it is, how torturous it could be, or how displeasurable it could be, whatsoever it is, right? Because life is puzzle, as we have talked about a lot, right? और Life is सबसे बड़ा puzzle. पता है लाइफ के बारे में क्या है? इट्स अ पजल, एंड व्हेन यू थिंक दैट यू हैव फिगर्ड इट आउट, समथिंग Hmm. अनयूजुअल हैपेंस. I mean, obviously, you are unnecessarily making calculations about your life because the real calculation is already, maybe you can say it's already done or whatsoever it is, but probably it's not in your hand. Yes, to a certain extent, we can say that yes, we need to keep reasoning things. We need to keep, contemplating things before we really make our final move. It's all right. It's all important, right? But we should not go beyond this very limit. We cannot be, I think, completely into this thought process, as what happens with many people, that they have started living their life more in their mind than in life. लोगों के साथ आजकल क्या हो रहा है, वो ज्यादा समय अपने माइंड में जी रहे हैं, मतलब दिमाग के अंदर ही जी रहे हैं, बिकॉज दे हम्म. आर कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग देयर थॉट्स अननेसेसरली, एंड दिस स्पाइरल गोज आउट ऑफ कंट्रोल कि भाई ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा. They are not able to perform actions at all, but they are living those actions right in their mind. And when it happens, it really creates turmoil, and it really makes things completely unstable, out of control. तो ये तो पहली चीज है, इसको तो समझना चाहिए, हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए जितना भी हो सके कि देखो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. वट एवर इज इन आवर हैंड, I think we should perform that, and beyond it, it's better to rest it to the supreme power, whosoever it is, whatsoever it is, right? तो ये तो क्लियर चीज हो जाती है. हाँ जी. यस, एक और चीज मैं बात करने वाला हूँ, वो ये क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एंड लेगेसी. कि पीपल वांट्स टू क्रिएट अ लेगेसी, वो एक लेगेसी भी क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू देयर वर्क, राइट? हम्म. तो व्हाट विल दे लीव बिहाइंड, वो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर व्हाट दे हैव डन और व्हाट दे आर डूइंग. दिस इज द कॉमन, आई थिंक कॉमन इमोशन फाउंड इन पीपल, राइट? सो वही हम बात कर रहे हैं. सो पहली चीज ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाउ विल योर वर्क बी रिमेम्बर्ड? हम कैसा कोई ऐसा काम करें कि हमारे जो काम को याद किया जाए? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? देखो, लॉर्ड श्री कृष्णा says one thing very beautifully, that those who are highly principled personalities often uh, be like a shining beacons. Means they keep inspiring their subordinates, their people who follow them through their actions. So now we can say that we have people around us from our history or even in our current time, those who are really a source of inspiration for us. Now, the final choice is what we have to make, which personality we want to admire and to which we want to be devoted, right? तो ये चीज तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लेगेसी छोड़ना चाहते हो कि कुछ काम एक्शन छोड़ना चाहते हो जिसकी वजह से तुम जाना चाहो. नाउ I think it's a very simple thing. I mean, why do we admire some philosophers? Why do we admire some scientists? Maybe just because of they have done certain thing to society, because their contribution to society development is really
significant, right? It's really remarkable. Therefore, we keep remembering their names. We also celebrate their anniversaries in most of the cases because they have done something good to their societies. They have Hmm. added value to the life of people, even if it is philosophers, scientists, or people like them. They have really enhanced the value of life in some or other ways. So, one thing is very clear from this aspect that yes, those who leave their actions behind them as only a source of inspiration or an influence, I think these people uh, always, in most of the cases, uh, got acknowledged widely. Then the people of the second category, those who leave some legacy. See, I don't know what do we mean to say when we infer the word legacy. Are we talking about some properties? Are we talking about some other material values or related things? And if it is, agar aisa hai, so I think these are absolutely unworthy of life and unworthy of you know accepting as or acknowledging it as something more valuable towards life. तो मेरे नज़र में तो मैं सिंपल से एक चीज बताऊं कि हाँ, आपके एक्शंस हैं और आपके ओवरऑल जो वर्क है, जो आपने काम किया है, अगर आप इसकी वजह से पहचाना जाना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू बी आइडेंटिफाइड बाय योर वर्क्स ओनली, बाय योर प्रोफेशंस, बाय योर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, आई थिंक इट्स बेटर ऑप्शन, इट्स फार बेटर ऑप्शन देन अदर ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? क्योंकि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, what we are doing, I mean, we are actually admiring, we are actually influencing people to do something good in their life, to do the Hmm. same thing that what we have done. It means we are promoting humanity. That, I mean, don't we? Because philosophers do what? They really make people aware about the subtle aspects of life. They really try to show the real value of life to people so that people could confidently live their life without any fear, fearlessly, completely, right? So they have really added value to the life, right? In the same way, if we do certain things to the society, the generation to come, I think the generation would definitely, um, I think, appreciate us, remember us for the works. तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है यहाँ पर, तो बाकी तो फाइनल डिसीजन खुद का होता है, व्हाट यू रियली वांट टू लीव, बट आई थिंक ये चीज अच्छी है। और मेरे हिसाब से लाइफ में इतना हम कभी कुछ ना बहुत ज्यादा ही सोच लेते हैं, वी रियली थिंक टू मच। मेरे हिसाब हम्म। से वी शुड नेवर बी थिंकिंग अबाउट लिविंग बिहाइंड लेगेसी, बिकॉज आप केवल अपना अपना काम करो ना पूरा बढ़िया तरीके से, डू योर वर्क, डू योर जॉब ऑनेस्टली, and people will then be talking about it, and then it will be राइट। kind of, it will be treated as a legacy which you have left behind, right? मेरे हिसाब से अगर ऐसा आप करोगे तो ऑब्वियसली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ना कहीं पर भी काम करते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टुगेदर विद यू, एंड यू आर एक्सेप्शनल स्पेशली अमंग दोज पीपल। आई थिंक लोग अपने आप से ही बात करते हैं, दिस पर्सन इज रियली वेरी नो गुड एट वर्क, वट एवर ही चूजेस, राइट। ही डज दैट एक्सेप्शनली वेल। ये तो लोग अपने आप में ही बोलते हैं, यू डोंट मेक देम से दिस फॉर यू, they say these things themselves, because जो दिखता है उसके लोग बात करते हैं। तो मेरे सबसे, वी शुड नेवर बी थिंकिंग टू मच अबाउट लिविंग अ लेगेसी बिहाइंड, वी शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स वी आर डूइंग। हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं, राइट? राइट। एंड ज्यादा हम फोकस्ड होकर कुछ करते हैं तो मेरे हिसाब से वो हम कर ही नहीं पाएंगे फिर, जिस ज्यादा तरीके फोकस होके ये तो से। भाई, ये तो पर्सनली एक्सपीरियंस है। इट्स ओके टू हैव और मेंटेन अ सर्टेन डिग्री ऑफ फोकस व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, हम्म। बट ओवर practicing focus and concentration often distract us from the very point which we फिर भी really हमें एक want. ही चीज लगी रहती है कि व्हाट इफ आई गो रॉन्ग, What if I go wrong? है ना? What तो if I go wrong? What if I say something which should not be uttered, क्या, right? यस, Something like this. दिस तो कीप्स वो तो सारी दिस चीजें। कीप्स हिंडरिंग यू। हाँ। By the way, I think in other words we can say we don't need to look every single thing happens to us seriously. या। Rather, we focus on the the you can say
the macro part of our life. Macro part in the sense that the most important events of our life. For example, example के तौर पे मैं बताऊं, whenever we read literature, so I mean, one thing is really great about literature is that we have a very magnificent kind of writings, right? We really get enthralled by that writing. We learn a lot from the writings of literatures and all these things. But when you go deeper into the literature and try to understand each and every sentence very minutely, closely, then somewhere it hinders us from understanding the whole concept of the paragraph. फिर हम उसको ना तो इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो हम Enjoy नहीं कर पाते, हर चीज we को can't enjoy सोचने में that. लग जाते हैं. Yes, we really can't enjoy that. This is really important. So, I mean, this decision, I mean, I think we should be able to take this decision. Are we really want to enjoy the reading, or we want to just take it as a burden? Now, things which comes and is perceived as a burden, I think cannot give you much positive results. That's all scientifically proven, right? You do things with a lot of pressure on you and expect good results to you. I think it's impossible. But if you enjoy each part of your journey, whatsoever you do, I think this there is a probability that you really may do good in that particular field. So यहाँ पर चीज बहुत सिंपल सी रखनी है हम It लोगों is को. tantamount to the situation when you go on the stage thinking that you will be saying everything you've read about, and then you Yes. end up, messing things up. Yeah, absolutely. Because then what we try only एक एक वर्ड how we सोचते could हैं. how we could be even the most. I mean, it's a meticulous act. In other words, I can say, Yes. because we want to act so carefully, so designedly that even a single word should not be, I mean, misplaced, right, or Mhm. misused, or whatsoever it is. But ultimately, it ruins entire thing. It Yeah. ruins the conversation. It ruins our reading. It ruins even if you are doing any work, right? Let's say if you are doing anything in your life, if you are going minutely with that, I think you are going to do self torturing, nothing else. But Yes. that is for sure. यस, एक और चीज हमें डिस्कस करनी है, वो क्या है? जैसे टॉक्सिक वर्क, टॉक्सिक लाइफ. देयर इज अ Hmm. टर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड गाइगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. Hmm. राइट. सो Got इसी it. पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं. जैसे जो भी हम द काइंड ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज वी गॉट, वी Hmm. आर गोइंग टू डिलीवर इन द सिमिलर फैशन. हमारा जो जो हम जो प्रोडक्टिविटी हम दिखाएंगे, वो कहीं ना कहीं की उसी के हिसाब से रहेगी जो हमारे दिमाग में है. सो हाउ मच योर वर्क इज अफेक्टेड due to your thoughts which are very toxic or negative, or just like garbage. Are this is very significant. Why? Because when you have any toxic idea, one single negative thought may ruin your entire day, let alone talking about your work. Because negative idea, negative opinion really consumes a lot of our energy, because then you keep processing your mind. A all time processing mind cannot, you know, give you a moment of relaxation, right? And when you have your mind very much in peace, right, enjoying full serenity, then you can not just enjoy the life, but can also excel in your own work. So I think a toxic idea, any negative idea, really impacts a lot adversely. And I think we should try to deal with it more positively, in a sense that we try that certain mindset should not dominate us, because once it becomes dominating, then it becomes really hard, because then it becomes something very uh, difficult to run down, राइट. सो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि बिकॉज वही वाली बात हो जाती है ना, कि यू हैव वन नेगेटिव थॉट एंड देन इट मल्टीप्लाइज इनटू 100 एंड देन इट ये गोज रिपल ऑन इफेक्ट आ जाता है एक्सपोनेंशियली. उसमें, एक रिपल इफेक्ट आ जाता है. हाँ, वही. एक टॉक्सिक वाला आइडिया आएगा तो पूरा सब कुछ ना टॉक्सिक हो जाता है. वो सब कुछ टॉक्सिक हो जाता है, फिर उसकी वजह से पूरा यार आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कि हाउ एक्टिवली यू प्रोसेस योर माइंड only to a certain event or to a certain task.
वेयर आवर माइंड शुड बी फोकस्ड ऑन, हम अपने माइंड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम अपने अपने टास्क के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव मतलब अच्छे रिजल्ट कैसे ले सकते हैं जब हम उसी के बारे में सोच रहे हो. Our यस mind is not at all distracted at all. But are we sure that our minds are not distracted? Obviously not. It is completely distracted. Sometimes we have our lectures and our professors are teaching us well, but our mind is wandering somewhere else, and we really don't have रोलिंग control. इन द गार्डन. We try to take it back and try to make it focus on the board, but then again it goes back. So this becomes even so challenging situation. Right now I'm talking, now we are focusedly talking to each other. या But when we are busy and when we are really uh, perturbed for any of the incident happened to us, right? Any of the news that we have got that somewhere shattered us. So I might be here before you, but mentally I'm somewhere else. I may यस. not be able to respond to you properly. So toxic mind, toxic thought process, all these are really detrimental. I mean, very और इसमें dangerous. प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू It गो डाउन. completely kills your productivity. यस. And once the productivity is killed, I think there is no scope left for specifically self appreciation, because यार हम लोगों को भी self appreciation की जरूरत होती है. या See, we cannot get appreciations from the world all the time. We are not actors, we are not players, we are not politicians. These politicians may have when they uh, need some kind of appreciation. For example, if an actor no अगर मूवी आफ्टर मूवी उनके जो फ्लॉप देने लगते हैं, so they also feel depressed. उनको भी they डिप्रेशन feel में आने depressed. लगते हैं. राइट उनको Yeah, भी लगता है कि भाई एक हिट मूवी जाए, बिकॉज दे वांट टू because बी इन द गुड बुक्स ऑफ अदर पीपल. आई मीन डायरेक्टर्स के मतलब वो अच्छा बनना चाहते हैं, तो कम से कम उनको हिट तो देनी पड़ेगी. राइट. right, right, right. तो ये तो क्लियर बात है कि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई आपका टॉक्सिक माइंड एक तरीके से पूरी तरीके से हिंडर करता है आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को, और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके फोकस से, आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव था आपका जीवन में अचीव करने के लिए, व्हाटसोएवर इट इज. ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए कि टॉक्सिक माइंड को किस तरीके से डील किया जाए, और किस तरीके से हाउ वी कैन स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग स्पाइरल स्पाइरलिंग. जो स्पाइरलिंग हो जाता है वो बहुत बहुत अनकंफर्टेबल कभी मेरे साथ हो जाता है कभी, क्योंकि माय सब्जेक्ट इज लॉ. आई कीप studying hard and hard, go deeper into it, then it becomes all very complicated, very disturbing. I cannot focus on a single thing because I start losing everything what I have read. As I mean, this is very common thing, common experience, right? So होता है ये सारी चीजें. So with this, I'm gonna wrap it up. But before I gonna wrap it up, I want the audience to keep one thing in mind that अगर वो चाहते हैं कि they should be known for the work, so मेरे हिसाब से उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. They should be वो नो दे शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स दे आर डूइंग. और सबसे अच्छा बात क्या है, दे शुड बी पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इनटू व्हाटएवर दे आर डूइंग. जो भी Right, कुछ वो कर रहे हैं पूरे मन के साथ में करें, और एक कोई ऐसी चीज करें जिसमें उनको बहुत ज्यादा मजा आता हो. मेरे हिसाब से इससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज और नहीं मिलेगी. कि आप सबसे अच्छा उसी में कर पाओगे जिसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट आता है. लेकिन कभी right. लाइफ में ये भी होता है कि आप वो नहीं कर पाते हो क्योंकि वो मौका नहीं मिल पाता जिसमें आपको बहुत मन होता है. लेकिन मेरे हिसाब से आप जब आपने जो करने लगे हो, वट एवर यू हैव अल्टीमेटली स्टार्टेड डूइंग, जस्ट मेक दैट योर लाइफ. आप उसी को अपनी लाइफ बना लो. बिकॉज लाइफ में मैंने हमेशा बोला है कि वो शायद हमें वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते, क्योंकि हम चाहते ही वही चीज है जो शायद मिलना ना हो. लाइफ में ये बड़ा थोड़ा सा वो है कि हम चाहते ही ऐसी चीजें जो शायद मिलती नहीं है हमें. राइट. सी ये मैं इसको अलग तरीके से भी बोलना चाहूंगा कि डोंट वेट फॉर द टाइम that you have decided to be happy. Understand the passing time as your only time where you can या be happy and where you should be happy. Because जब हम सोचते हैं कि हम ये करने के बाद एक तरीके से खुश होंगे या ये अचीव करने के बाद we will feel happy, I think we should completely avoid this particular thought process, this particular idea towards life. Because what is important for us is that this fleeting nature of time which is just passing by, यस. because life is full of uncertainty, so we really don't know what is going to happen next to us. So in this ऑब्वियसली. full of perplexities हमको तो जो है whatsoever it is, that's it. और मुझे अपना एक जो मैंने कोट लिखा था वो भी ध्यान आ गया, बिकॉज यू जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ द सेम विद योर वर्ड्स.
कि if you wait until you feel like acting before you act, you'll never act. Right. Wait until you feel like acting before you act, you'll never act. You must act first, then your feelings will follow. अब बस करना Right. स्टार्ट करो, feelings तो आ ही जाती हैं, right? Right. With this, I'm gonna wrap it up, and we'll be coming up with the next, or I would say, fantastic and insightful idea to have this on a podcast. Until then, I'm taking a leave. See you.